में आप व्यक्त करें। नमस्ते सर. हॅलो, कॅन यू हिअर मी? येस येस येस. नमस्ते सर. मला तुम्ही संधी दिल्याबद्दल तर सन्माननीय सोलंकी सर, गुप्ता सर, डॅनियल सर व स्टेजवरील इतर सर्व सन्माननीय व्यक्ती, जवळजवळ 3 ते 4 वर्षापासून मी या इव्होल्युशन प्रोसेसमध्ये जोडला गेलेलो आहे. तर खास करून निलेश सर प्रत्यक्ष वैयक्तिकरित्या सुद्धा संपर्क करत असतात म्हणजे याच्यासाठी. आणि हा जो GMRTचा जो प्लॅटफॉर्म आहे तो खूपच म्हणजे रिमोट एरियातील मुलांसाठी खूपच चांगलं असं प्लॅटफॉर्म आहे. म्हणजे जे प्रत्यक्षामध्ये इथे येऊन एक्झिबिशन मध्ये सहभागी होऊ शकत नाहीत, ते ऑनलाईनच्या माध्यमातून खरोखरच म्हणजे कुठूनही जॉईन होऊ शकतात. आणि ती त्यांच्यासाठी एक फार मोठी गोष्ट आहे. आणि त्यामुळेच जास्तीत जास्त प्रोजेक्ट या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतात, बघायला मिळतात. बरेच जण याला व्हिजिट करतात आणि म्हणजे अत्यंत उच्च दर्जाचं काम या ठिकाणी चालतं. मी स्वतः पण प्रत्यक्ष पाहिलेले आणि अत्यंत उच्च दर्जाचे हाय लेवलचे प्रोजेक्ट आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतात. तर ह्या इव्होल्युशन प्रोसेसमध्ये जवळजवळ 4 ते 5 वर्षापासून मी सरांमुळे आहे आणि खरोखरच याचा भाग असल्याचा मला खूप खूप आनंद होतो. आणि यावर्षी सुद्धा आम्ही सांगितल्याप्रमाणे सरांच्या सूचनेप्रमाणे प्रोजेक्टचं इव्होल्युशन केलेलं आहे. नक्कीच म्हणजे जास्तीत जास्त चांगलं करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि सरांनी आम्हाला प्रत्येक वेळेला संधी दिलेली आहे. त्यामुळे मी सरांना खूप खूप धन्यवाद मानतो आणि या ठिकाणी थांबतो. धन्यवाद. थँक्यू. थँक्यू जैन सर. थँक्यू. निमसे सर, थोडक्यात. नमस्कार. मला बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल. विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना योग्य पद्धतीने वाव मिळावा आणि सर्व स्तरातील विद्यार्थ्यांचा सहभाग नोंदावा म्हणून निलेश सरांच्या माध्यमातून ही संकल्पना उदयाला आली. विद्यार्थ्यांबरोबरच आम्हा शिक्षकांना सुद्धा चांगल्या प्रकारचं यातून शिकायला मिळालं आणि काय असू शकतं या संदर्भामध्ये आम्हाला माहिती मिळाली. त्याचबरोबर सर्वच प्रकल्प जे आहेत विद्यार्थ्यांनी तयार केलेले ते खरंच पात्र आहे. परंतु आम्हाला सुद्धा याच्यातून प्रकल्प निवडताना आमची सुद्धा खरी कसोटी लागलेली आहे. त्याचबरोबर यावर्षी दिव्यांग विद्यार्थ्यांना सरांनी जे सामावून घेतलं त्याबद्दल सुद्धा आम्ही सर्व परीक्षक या उपक्रमातून भारावून गेलेलो आहोत. हे एक नवीन आव्हान मला या निमित्तानं मिळालेलं आहे. धन्यवाद सर, मला बोलायची संधी दिली त्याबद्दल. थँक्यू. आणि एक आपण लास्ट प्रतिक्रिया घेऊया. रेश्मा यादव मॅडम. येस सर. गुड मॉर्निंग सगळ्यांना. आवाज येतो का सर? येतोय मॅडम. येस. सर्वप्रथम GMRT सर्व टीम मी त्यांना धन्यवाद देते. आताही 2 माझ्या सहकाऱ्यांनी जी भावना व्यक्त केली अगदी माझी तशीच आहे. या GMRTशी आम्हाला जोडता आलं. इतक्या कानाकोपऱ्यातून महाराष्ट्रातल्या अगदी ग्रामीण दुर्गम भागातल्या मुलांशी आम्हाला जोडता GMRT मुळे जोडता आलं. तर त्याबद्दल आम्हाला खूप समाधान आणि अभिमान वाटतो. आणि इतके सुंदर प्रोजेक्ट आम्हाला पाहायला मिळाले. यावेळेस दिव्यांग मुलांचे प्रोजेक्ट पाहताना सुद्धा आम्हाला खूप छान वाटत होतं. काही काही गोष्टी तर आम्हाला त्यांच्याकडून शिकायला मिळत होत्या. तर एक शिक्षक म्हणून हा एक अनुभव खूप छान आहे की विद्यार्थ्यांच्या वेगवेगळ्या आयडियाज आम्हाला खूप छान वाटत होतं त्यांचं इव्हॅल्युएशन करताना. GMRT बरोबर गेले 3-4 वर्षापासून हे काम करताना आम्ही दरवर्षीच इतक्या बाकीच्या कुठल्याच नाही पण या कामाशी आम्ही खूप आतुरतेने वाट पाहत असतो. कारण आम्हाला सुद्धा कुठं न जाता ऑनलाईन मोडवर महाराष्ट्रातल्या इतक्या मुलांचं टॅलेंट पाहता येतं. आणि खऱ्या अर्थाने GMRT मुळे पुणे जिल्हा विज्ञान अध्यापक मंडळामुळे आम्हाला ही संधी मिळाली. GMRTच्या टीमच्या सर्व सदस्यांचं मी खूप आभार मानू इच्छिते की अतिशय निष्ठेनं इतकं सुंदर त्यांनी नियोजन केलेलं होतं. कुठला व्हिडिओ ओपन होत नाहीये का, प्रत्यक्ष त्यांनी आम्हाला फोन करणं, म्हणजे प्रत्येक विद्यार्थ्यांचं व्यवस्थित इव्हॅल्युएशन व्हावं ही जी तळमळ होती ती आम्हाला खूप या अनुषंगाने अनुभवायला मिळाली. त्यामुळे मी सगळ्यांचंच, त्याचबरोबर जे विद्यार्थी त्याच्यामध्ये पार्टिसिपेट झाले त्या सर्वांचं, त्यांचे जे गाईड आहेत त्यांनी सुद्धा अतिशय उत्कृष्टता त्यांची तयारी करून घेतली. त्यांचेही या निमित्ताने मी अभिनंदन आणि आभार इच्छिते. आणि मला संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद सर. थँक्यू मॅडम.
Thank you. And now we are all waiting for the main event to happen. That is inauguration of our GMRT Online Science Day. With this, now I request our chief guest today, on behalf of NCRA GMRT, Sri Daniel Bambu. Sir, please inaugurate the event through your sharing screen so that we all can witness. Thank you. And with the permission of all, I am very happy to inaugurate this. Hope everybody is seeing the screen, right? Yes. Yeah. Okay. Yes. Please go ahead. I'm very delighted to inaugurate this GMRT Virtual Exhibition 2024. Hello friends, have you ever wondered how these giant dishes move across the sky and look out the horizon of space? Well, let me take you to the command and control module of GMRT, control room. You must have seen the cockpit of planes, control centers of NASA and ISRO on TV. We have here one too, from where we point the antennas to the stars and catch their signals. These are our crew members who run this telescope on 24/7 basis, day and night. The radio astronomers all over the world observe here various nebulae, galaxies, supernovas, neutron stars, sun, and planets too, and produce interesting results in the form of imaging, spectroscopy, and pulsar profiles. We are also involved in searching signals from early stages of universe formation, that is, Big Bang. Here, you can see our observatory schedule for the observations. Our team members execute these observing plans accordingly. Normally, we collect a few terabytes of data every day. Now, I will show you how we observe the stars. Initially, we have to set up the frequency band and tune the receiver chain. When setup is ready, we move the antennas to look at the target star. Once the antennas are looking at the star and signals are visible, we start recording the signals into the file. The astronomers has the list of targets and has to keep on switching between targets and also to follow some calibrations on known targets. This is how we keep on observing the stars. This is what we call as manual mode of observing. The GMRT control and monitoring system is much more powerful and it is like a central nervous system of the telescope. It has the programming capability. One can program all observing activities and execute them automatically, which is nothing but the auto mode of observing. Occasionally, GMRT is also used to track the space missions. On September 19, 2016, GMRT successfully tracked the ExoMars mission of European collaboration with NASA. With the observations, the control room team has to keep track of the telescope's health, like wind speed, system temperature, and subsystem problems, etc. And also assist the technical staff in maintenance activities. Thank you. Sir, you can stop sharing the screen. Thank you. Sir, I request you to start your inaugural speech. Thank you, respected Professor Ashwin Gupta, Dr. Ishwar Chandra, Sri Nilesh and Dr. Solanki, the colleagues of NCRA,
esteemed teachers and the brilliant young minds who are listening me through this online platform. First of all, let me congratulate the entire team of NCRA and IIK for creating this platform and reaching out to this big magnitude of children, especially on the occasion of Science Day. Today, we have already started the celebration of NSD 2024. We gather actually to celebrate the spirit of scientific inquiry and innovation that has actually shaped our country's progress. This day is not just a commemoration of C.V. Raman sir's groundbreaking discovery of the Raman effect in 1928, but also an occasion to reflect on the vital role that science and technology plays in building a developed and self-reliant India, a Viksit Bharat. That is the theme of NSD 2024. आपको सब पता है, हम लोग ऑलरेडी ये अमृत काल का काम में जुड़े हुए हैं। 2047 तक इंडिया को एक सुपर पावर, इकोनॉमिक एज वेल एज साइंटिफिक सुपर बनाने की कोशिश में हम लोग सब मिला हुआ है। बच्चों को मैं एक्चुअली साइंटिस्ट बुलाना चाहता हूं। आई वुड लाइक टू एड्रेस ऑल ऑफ यू एज साइंटिस्ट। यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाई यू आर जस्ट इन हाई स्कूल। Why I'm saying this is because science is not just a subject that you study in school. It's not just the theory, the experiments. It is an art to unravel the mysteries of this ever-changing world. It is not restricted to what happens in a lab or notes of a scientist. Science is in our mothers in the kitchen when mother adds salt to the water while boiling eggs. It is the importance of having a scientific mind and temperament, being curious and being able to ask questions of why, what and how. बच्चों को ये बताना चाहता हूँ, आपका एक साइंटिफिक मेंटालिटी होना चाहिए, टेम्परामेंट होना चाहिए, पूछने का उत्सुकता होना चाहिए, क्यों, कैसे एंड कहां. I would like to compliment NCRA, a unit of TIFR of DAE, who has been in the forefront of astrophysical studies and research and unraveling the mysteries of the universe. We all know, we heard that the brand ambassador GMRT का जो एंटीना है, हमारा ब्रांड एम्बेसडर है. बच्चों को मालूम है ये वंडरफुल टेलीस्कोप जो बनाया है, कितने दूर का यूनिवर्स का सेलेस्टियल बॉडीज को दिखते हैं उससे. It is in billions of light years. Do you know that IEEE का 3 माइलस्टोन हुआ था इंडिया में? वो सीवी रामन साहब का काम, जेसी बोस का काम, उसके बाद तीसरा नंबर पे GMRT का योगदान होता है. So it is a wonderful achievement of GMRT to be the 3rd IEEE milestone of India. So basically GMRT का और NCRA का जो काम है, it has paved the way for tremendous advancements. वही मैं बताना चाहता हूँ, हमारा देश का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए, देश का प्रगति के लिए जो आपका जो योगदान है, it's really wonderful. It resonates with the National Science Day theme, which is indigenous technologies for Viksit Bharat. So you as children, you must be wondering, how does science and technology help to build a self-reliant India? For a nation to progress, the first thing we need is energy. Human Development Index is closely related to per capita electricity consumption in the country. एक हर एक आदमी कितना बिजली यूज करता है साल में, वो एक बहुत महत्वपूर्ण फिगर होता है. इंडिया का जो फिगर है पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, इट इज ओनली 1250 किलोवाट पर ईयर. This has to increase to 4-fold, so to reach an optimum value, so that we have development and good human index at the same time. But at the same time, electricity, when you are producing more, we need to protect the earth. आपको सब मालूम है कार्बन एमिशन और ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रॉब्लम. सो इसको कम करने के लिए हमको फॉसिल फ्यूल्स, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस एवं एक कम करना पड़ता है. सो as a DAE employee, I'm proud to say that the Prime Minister ने जो commit किया है 2070 में net zero carbon emission, उसको to materialize this
net zero carbon emission by 2070, nuclear program and the nuclear reactor fleet that the Indian Department of Atomic Energy is designing and constructing and commissioning in various parts of the country will play a big role. मैं खुद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड कोलैबोरेशन डिवीजन में काम करता हूं. हम लोग का we transfer a lot of technologies to the industry, and not only to the industry but to rural India also. I'm happy to announce that we have a basket of 250 technologies in every field: agriculture, biotechnology, radiation medicine, healthcare, advanced instrumentation, engineering, environment, and water management. How does such technologies get evolved? एक्चुअली क्या है, बीआरसी का महत्व ऐसा है कि एक जगह पे 6000 साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स एक साथ काम करते हैं. एंड हमारे जो प्रोजेक्ट के लिए तो कोलैबोरेशन ही सबसे महत्वपूर्ण होता है. इसकी वजह से वी आर एबल टू प्रोड्यूस ऑल दीज टेक्नोलॉजीज. आपको मालूम है, वी हैव डेवलप्ड दिस फॉर आवर इंटरनल पर्पसेस. ये टेक्नोलॉजी हमारा प्रोजेक्ट्स के लिए बनाया था, क्योंकि हम लोग 1974 एंड 1998 में जो पीसफुल एक्सपेरिमेंट्स किया था, उसके बाद हम लोग टेक्नोलॉजी डिनायल में था. लेकिन इसलिए हमको खुद ही सब टेक्नोलॉजी डेवलप करना पड़ेगा. स्पेशली द प्लेस वेयर आई वर्क, रिप्रोसेसिंग एंड ऑल इज कंप्लीटली इंडिजिनियस, एंड इट्स अ बिग क्रेडिट टू इंडिया. बच्चों को मालूम होगा 2005 में 123 एग्रीमेंट हुआ था यूएस के साथ. उसमें अमेरिका को उनका हाइड एक्ट अमेंड करना पड़ा so that they can enter into a nuclear cooperation agreement. So very clearly we can say that DAE and the Indian nuclear program plays a pioneering role in the whole global world of nuclear energy. I do not want to talk about, continuously about the technologies, but I will request all the children to go to the BRC website. Entrepreneur Corner है, brc.gov.in/technologies. उधर जाएगा तो आपको ये सब टेक्नोलॉजीज के बारे में आइडिया मिलेगा, उसका स्पेसिफिकेशंस एंड डिटेल्स ओवरव्यू सब मिल जाएगा. आजकल इंडिया में स्टार्टअप का जमाना है. वी हैव 1,15,000 स्टार्टअप्स. I encourage all my dear children to start something in commercializing BRC technologies. Rather than looking for jobs, I think you should start a business with this technologies. And we have what is called the Atal Incubation Center at BRC, wherein we will incubate you. हम आपको जो business incubation का काम और product process का जो mentoring का काम BRC कर सकते हैं. So once again, I request all the, especially the 11-12 children who are interested to visit BRC website and get knowledge about all these things. Because high school jo time hai, you start thinking of your future. And when you start thinking of the future, the science ka jo pursuit hai, it will help you in a big way. So whether it is unraveling the secrets of the cosmos, developing innovative technologies, or finding solutions to pressing global challenges, science will empower you to shape a better world. This is what institutions like NCRA does, and where they study about galaxies which are 50 billion light years away from us. I would like to ask the children to see one more video. I have not sharing it. Please read about the James Webb Telescope and learn about the Andromeda galaxy. You will really get inspired. मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछता हूं, आप उसका आंसर बाद में देख लीजिए. समझो, there is a condition wherein you feel that suppose ऐसा हुआ कि sun suddenly explodes and goes away, sun disappear होगा. आपको आइडिया है कि वो कितना हम लोग देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? एक्चुअली क्या है, इसके लिए हमको दो चीज मालूम होना पड़ता है कि ये सन का लाइट कितना टाइम में अर्थ में आता है. इट इज अराउंड 8 minutes and I think 20 seconds. But at the same time, if the sun has exploded, the light will, as I told, it will come after 8 minutes and 20 seconds. But the gravity also will disappear at the same time. But do you know that gravitational waves also takes time? And in vacuum, actually, the speed of light and the speed of gravitational waves are same. But actually, we will actually have some time. I think somebody was telling that around 15 seconds
टाइम हमको मिलेगा वो डिसअपियरेंस देख सकते हैं बिफोर वी फील द लॉस ऑफ ग्रेविटी। सो ये सब बहुत ही इंस्पायरिंग है, especially scientists आज grand theory of forces and fundamental particles सब पढ़ रहे हैं, so you should also understand how do scientists study such small particles के बारे में, basic forces of nature के बारे में। आपको मालूम है एक इलेक्ट्रॉन का साइज अराउंड 10⁻⁴ मीटर, कैसे दिखता है उसको? तो ये सब एक्चुअली उससे भी छोटा पार्टिकल्स रहता है, फंडामेंटल पार्टिकल्स, उसको देखने के लिए साइंटिस्ट एक्सेलरेटर्स बनाता है। तो एक्सेलरेटर मेरे को खुद को आई हैड अ फॉर्च्यून टू वर्क एट सर्न जेनेवा प्रोजेक्ट LHC where the Higgs boson, that the size of Higgs boson was 10⁻32 meter, and this was invented in the last decade. So I encourage all the children to learn about these great experiments at CERN, at NASA, at Fermilab, and get motivated. I would like to stress about the importance of basic and fundamental research. When actually TIFR जैसा institution है जो बेसिक फंडामेंटल रिसर्च किया, उसकी वजह से प्रगति कैसे हुआ, आई वांट टू एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। जैसे आपको मालूम है सिलिकॉन एक एलिमेंट है, सॉइल में भी रहता है, 28% ऑफ अर्थ क्रस्ट इज SiO2, बट सिलिकॉन का जो सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी जो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके they discovered, somebody must be wondering why he is working on this material called silicon. But you know, because of that work, that fundamental work, the entire world of electronics, computers came out with. So this is the importance of basic and fundamental research. So students get enamored to this fascinating world of science. You know, today very soon we will understand how the power of fusion also human beings will master. You know, ITER का एक experiment चल रहा है फ्रांस में। So जैसे सूरज में, सन में जैसे एनर्जी प्रोड्यूस होता है, वो भी हम लोग मास्टर करेंगे। So it is a rapid technological change that is happening. So possessing skills in science and technology is a powerful way to future proof your career. ये याद रखना, कोई भी फील्ड में रहेगा, लेकिन आपको कंप्यूटर्स, मैथमेटिक्स, साइंस के बिना आपको आगे बढ़ना मुश्किल है। तो the ability to adapt, learn and apply knowledge will be your greatest asset. So ये भी आप लोग याद रखना। As you commemorate this Science Day, let it be a reminder that you are inheritors of a legacy of intellectual giants like C.V. Raman. So मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक गूगल सर्च जरूर करना, DAE डिजिटल लाइब्रेरी, गूगल में सर्च करेगा, आपको एड्रेस भी बता देता हूँ, https://dae.digilib.in, dae.digilib.in. You can see flip books of or you can even download books on 4 great scientists, of our great scientists, Dr. Homi Jahangir Baba, Dr. Vikram Sarabhai, Marie Curie, C.V. Raman sir, and Enrico Fermi. Please go to this website, read their stories and get inspired. I urge each one of you to embrace the spirit of curiosity, to be fearless in your pursuit of knowledge. Science is not merely a subject. It is a mindset, a way of thinking that fosters creativity, critical thinking, and problem-solving skills. So I request all of you to seize this opportunity to dive into this world of science, to explore the unknown, and to contribute to the ever-expanding realm of human understanding. बच्चों, आपका potential मतलब it is boundless, and through the lens of science, you have the tools to shape a future that transcends the boundaries of imagination. Let me wind up by thanking you all for this opportunity you had given me. I end wishing a great Science Day celebration to all at NCRA, and wishing a bright future to all my dear children. Thank you. Thank you, sir. Thank you. But at the same time, we'll request that if you have a time, that please do visit our offline Science Day also at GMRT Observatory. This is on 2 days, 28th and 29th of February. And that is also you will experience that the same thing. सर ने हमें बताया अभी जो इनॉग्रल स्पीच अभी दिया है बच्चों के लिए या सभी के लिए, कि एक फंडामेंटल साइंस में एक निरंतर कोशिश
उत्सुकता और ज्यादातर प्रयास हमें सारे लोगों ने करनी चाहिए, ताकि हम देश को टेक्नोलॉजी के साथ साथ, क्योंकि अगर विज्ञान के खोज में आपको फंडामेंटल रिसर्च करनी है तो टेक्नोलॉजी की बहुत जरूरत है। तो दोनों एक साथ चलेंगे, विज्ञान और तंत्रज्ञान, तो हमें हमारे देश के लिए सब बहुत बहुत फायदेमंद होगा। लेकिन इसको करने के लिए जो ज्यादातर भरोसा हमारे देश में बनाया जाता है वो सारे बच्चे हैं। तो बच्चों को आगे आना चाहिए। उन्होंने ये बताया कि बीआरसी डीएई और ये जो है जीएमआरटी ऐसे जो संस्था है आपको इसके लिए क्या क्या मदद कर सकती है, और ये बड़ा उदाहरण है। जैसे हमने बोला है कि जीएमआरटी जैसे एक ब्रांड एम्बेसडर है, वैसे ये डीएई का ही यूनिट है। तो डीएई के लिए ऐसे बहुत सारे यूनिट है कि जो पूरे देश के लिए बहुत सारे ब्रांड्स, इंस्पिरेशन प्लेसेस होंगे, इंस्पिरेशन थिंग्स हो सकती है आप सभी के लिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपने एग्री करके। तो अभी प्रोग्राम का जो लास्ट हिस्सा है वो है आभार प्रकट करने का, और इसके लिए हमारे वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी श्री जोंदड़े, मैं इनको रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया आप आभार प्रकट करें। Yeah, thank you, Dr. Solanki. I think I am audible, right? यस यस यस। A warm and graceful morning to our most valued, honored Chief Guest, Sri Daniel Babu, Head Technology Transfer and Collaboration Division, Baba Atomic Research Center, Department of Atomic Energy, Mumbai. GMRT Science Day Committee, Growing Dots, worthy teachers, evaluators, participated students, my colleagues, and everyone gathered here. It's my privilege to propose a vote of thanks and acknowledge the contribution of those who worked really hard to make this GMRT Online Science Day happen. I extend a really hearty vote of thanks to today's chief guest, Sri Daniel Babu. He spared time from his busy schedule to grace the occasion. Today, we had an opportunity to hear your thoughts, and this will surely be going to encourage the students in future. Your thoughts have enlightened the minds of students and have shown a new path. Thank you very much. I would like to thank Professor Ishwant Gupta, Center Director, NCRA, because of whom this event is possible. I thank Professor Ishwar Chandra, Dean GMRT and Chairman GMRT Science Day 2024 for the welcome remarks. I thank Dr. Solanki for introducing and briefing about the GMRT Science Day. I thank Mr. Chadavelkar, Growing Dots, for developing such a beautiful mobile application, without which it would have been impossible to us to organize this event. An event like this cannot happen overnight. The wheels start rolling months ago. We have been fortunate enough to be backed by a team of very proactive and dedicated staff of our GMRT, the evaluators, the teachers who are well versed in their job. I am short of words for their involvement and their willingness to take on the completion of the tasks beyond their comfort zones. Thank you very much. Learning is always a good opportunity to feed our mind as it helps to us grow. Through such events, we get a chance to boost our knowledge with an unique opportunity to dive into a field of subject that might be unfamiliar to us. So I would like to take a time in thanking the participated students who not only are part of this event, but also cheered and motivated us to keep moving. Last but not the least, a big thank you to each of you who made this event memorable for all of us. Thank you all, and I would invite you all to visit the GMRT Science Day 2024 in offline mode at GMRT Khodat on 28th of February and 29th of February between 9:30 to 5 p.m. And the prize distribution of the same has been scheduled on 29th of February at 3:30 p.m. onward. Thanks a lot, and I'm handing over to Dr. Solanki to proceed for the closure then. Yeah, thank you, Yundra sir. And with this, and with the permission of all authorities, before I declare this end of, I once again thank you, Daniel sir, and I once again request all of you, the audience on YouTube, also kindly visit these things, and all teachers also, they can come, and winners whom names will be announced by Mr. Nilesh today, they will be contacted. So kindly be available around 9:30 for this prize distribution ceremony. Now, before I say that this is the end of program, I request each and everyone who is in online mode to kindly switch on their camera to take a group photo.
1, 2, 3. Thank you. 1 second. Second page, please click. So thank you all. Thank you very much. And with this, we end the program. Thank you, everyone. Thank you. The exhibition will be on. Thank you.